Good morning, everyone. We'll wait for a minute and then we'll resume our class. Please wait, there is some technical issues. I have to see that. Okay, now it's okay. I think the voice is audible. Now my voice is clear. I think it's okay, fine. Now my voice is clear. Please tell me. Okay, now it's fine. It's okay, I think. Now everything is okay. Voice is audible. It's okay, I think. Now everything is okay. Please tell me, is my voice is audible? Voice is audible. Okay, so because of some technical issue, I could not carry on my class. So now that problem has been resolved, so we'll be continuing our class. So, please tell me, is my voice is audible? Okay, so you see, Nidhi, Rishi, can you tell me my voice is clear or not so that I can continue? Okay, because of some technical issues, there are some issues today. I think that issue will be solved. Okay, because of some technical issues, there are some issues today. I think that issue will be solved. Okay, don't worry. It's okay. I think it's fine now. Technical issues, there are some issues today. I think that issue will be solved. Okay, now. It's okay. I think it's fine now. Hopefully everything is okay now. So now we'll continue our class. So with this iconic courses, you see, these all things you will be getting extra benefit. These are the things which we are getting extra benefit, and extra benefit like personal coaching, question answer, mains answer writing, study planner, and personal feedback. Okay, and with this extra benefits, obviously you see the fees will increase, and really if you subscribe it, you will really definitely you'll feel that iconic course is much better than that of any other course. So I would suggest you that you please go for iconic courses. Okay, and then you see about optional subscriptions. You see, this is about optional subscriptions. So today here I'll be taking Indian Constitution and Polity. So with this optional subscription, you see for 1 month the fees is 5,000. For 6 months the fees is 22,500. For I would suggest you that you should go for 12-month fees. So 12-month fees is 27,500, and for 24-month fees is 40,000, and for 36 month fees is 50,000. But again, if you apply my promo code, अगर आप मेरा promo code apply करते हैं MDYT, अगर आप मेरा promo code apply करते हैं MDYT, तो you will see you will get 10% discount. और इस 10% discount की आपका amount कितना आ जा रहा है? You see, how much very important. And okay, so you see, this is the amount which you'll be getting. That is for 1 month. For 1 month it's 4,500. For 6 months it's 20,250. For 12 months the fees will be 24,750. For 24 months the fees will be 36,000, and for 36 months the fees will be 45,000.
Okay, so this is what we'll be having. Now, my unacademic ID number, Telegram ID number is @unacademic_MKD. That is MDYT. If you try my promo code, you'll be getting 10% discount with this. Now, today we'll be discussing about citizenship. Okay, so today we'll be discussing about citizenships. अब देखिए जब हम citizenships की बात करते हैं, okay, okay, now see, we were discussing just now. We discussed about the citizenship. Now we are discussing about the citizenships. Okay, and when we people are discussing about, okay, when we are discussing about the citizenship, हाँ प्रकाश, आप क्या कह रहे हैं? What you are saying, प्रकाश? सर कोर्सेज फ्री में कीजिए. प्रकाश कोर्सेज फ्री में तो करा ही रहे हैं. यूट्यूब में जितने भी कोर्सेज होंगे सब फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे. बट इसके अलावा जो इलैबोरेट डिस्कशंस यूपीएससी में आंसर राइटिंग कैसे होगा, उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना. अब आप भी समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें तो फ्री में करवाई जा रही हैं. ओके, सो यू सी, व्हेन वी टॉक अबाउट, हम लोग सिटीजनशिप की बात करते हैं. देखिए, एक फ्लो चार्ट के थ्रू आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू व्हाट डू यू मीन बाय सिटीजनशिप. सिटीजनशिप होता क्या है? ओके, ओके, सो अब देखिए, जब हम व्हेन वी पीपल आर आई एम डिस्कसिंग अबाउट सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप के बारे में इसका नीडल होता है पीछे में. सो व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट दिस सिटीजनशिप्स, तो आप देखिए इस सिटीजनशिप्स के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिटीजन्स. ये आपको भी पता होगा. वन इज सिटीजन ऑफ आवर कंट्री एंड द अदर वन इज एलियन. अब ये एलियंस जो है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं. द एलियंस हैज आल्सो बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज फ्रेंडली एलियंस and the other one is enemy aliens. The other one is enemy aliens. Okay, तो अब ये दो चीजों में आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई है. ओके, अब एलियन का मतलब होता है यहां पर फॉरेनर. ओके, अब फ्रेंडली फॉरेनर्स के साथ हमारा कैसा संबंध है, उनको हम देंगे सिटीजनशिप्स, और एनिमी के साथ कैसा है, उनको किस किस कंडीशन में नहीं देंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ अब देखिए, जब हम फ्रेंडली एनिमी, अब देखिए हमारे जो सिटीजन्स होंगे उनको जो सिटीजनशिप दी जाएगी, तो उनको ऑल राइट्स दे विल बी अवेलेबल. ऑल राइट्स which are there in constitution
कॉन्स्टिट्यूशन दे विल बी गेटिंग इट, ऑल राइट्स दे विल बी गेटिंग, माने सारे फंडामेंटल राइट्स उनको मिलेंगे. बट बट एलियंस, चाहे वो फ्रेंडली हो, एनिमी की तो बात ही छोड़ दें हम लोग, इफ ही इज ऑफ एलियंस, अगर फ्रेंडली, जिनको हम सिटीजनशिप दे दिए, इवन दो उनको सिटीजनशिप देने के बाद यू सी दे विल नॉट बी गेटिंग विच राइट दे विल नॉट बी गेटिंग, 15 नहीं मिलेगा, 16 नहीं मिलेगा, 19 नहीं मिलेगा, 29 एंड 30 नहीं मिलेगा. So these 5 fundamental rights they will not be getting. Further you see उनको वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑक्युपाई नहीं कर सकते एज लाइक प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, इलेक्शंस कमीशन, ये सारे पोस्ट आप ऑक्युपाई नहीं कर सकते हैं. ओके, तो अब देखिए ये जो चीजें, दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट सिटीजनशिप. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सबको समझ में आ गया प्लीज? ओके, नाउ वी कम टू सिटीजनशिप. अब हम लोग इसको समझते, अब इन्हीं चीजों को जो मैंने आपको बताया उसको इलैबोरेट में डिस्कशन करेंगे कि वो कहना क्या चाहता है. व्हाट डज इट सेज? ओके, so you see there are two class of peoples in any country. Two class of peoples are there in any country, that is citizens and alien. That is what I have said also, that there are two types of people. You can see that here is the citizens and aliens. अब देखिए जब हम citizens की बात करते हैं तो citizens किसी भी country में, in any country if you talk, so in any country if you talk you see there are two types of citizens. One is citizens and another one is alien. अब citizen make up political community of the country and enjoy all the rights and entitlements. यानी जो citizens होंगे, जिनको भारत की नागरिकता मिलेगी किसी भी कंट्री की, वो सारे political rights they will be available. They will be getting all the fundamental rights. और जितने भी उनको rights हैं उनको सारे rights मिलेंगे. Okay. And you see with this rights they will be the people, those who are of that country, particular country, unko sare rights, all rights they will be available. But aliens, they will not form any political rights. उनको political rights नहीं मिलेगा aliens को, और वो गवर्नमेंट कंट्रीज, गवर्नमेंट में उनका कोई ज्यादा योगदान नहीं होगा. ओके, बट जब हम एलियंस की बात करते हैं, दे आर डिनाइड सम ऑफ देम. फॉर एग्जांपल, सिटीजंस कैन वोट एंड कॉन्टेस्ट टू होल्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस लाइक अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वाइट एलियंस कैन नॉट. अब देखिए इसका मतलब क्या बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यस, प्रकाश, निधि, those who are watching, please, पिंकी दुबे, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज आ गया था, बट डोंट वरी, नाउ आई थिंक द प्रॉब्लम इज सॉल्व एंड वॉइस इज ऑडिबल. ओके, अब देखिए उनको क्या क्या राइट्स नहीं मिलेगा, एलियंस को क्या क्या राइट्स नहीं मिलेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, सिटीजंस कैन वोट एंड दे कैन कॉन्टेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, दे कैन कॉन्टेस्ट टू होल्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, मतलब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, लाइक पार्लियामेंट्री में. मतलब the aliens has no right. That means if they are being provided. Okay, तो अब आप देखिए कि जो भी so you see these aliens they will not get above right. नहीं, right to vote नहीं, वो रिसाइड कर सकते हैं, मिलेगा. अब देखिए जब मैंने आपको ये बताया था कि आर्टिकल 15, इसका हम लोग इलैबोरेट में डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 16 क्या है, आर्टिकल 19 क्या, आर्टिकल 29 एंड 30. आर्टिकल 29 में भी विथ रिस्ट्रिक्शन है. देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन.
ओके, सो यू सी इन दिस रिगार्ड सो अब देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इफ यू वांट टू गेट द सब्सक्रिप्शन, बिकॉज द अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग टू टाइप्स ऑफ कोर्सेज. ओके, तो दिस इज व्हाट आई मीन टू से इज दिस, कि आप देखिए अनअकैडमी is providing two types of courses, that is plus course and iconic course. Iconic course, अब देखिए इन कोर्सेज में इफ यू वांट टू अप्लाई यू हैव टू गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट. आपको सब्सक्रिप्शन करानी पड़ेगी, एंड यू सी विथ माय प्रोमो कोड दैट इज MDYT, आपको मेरे प्रोमो कोड से अप्लाई करनी पड़ेगी. ओके, प्रोमो कोड से यू हैव टू अप्लाई. Okay, these all are no doubt free lectures you can listen, but for more elaborate और अच्छे से डिस्क्रिप्शन चाहिए, आपको आंसर डिटेल में लिखना है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर दिस. आपको ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा विथ माय प्रोमो कोड दैट इज MDYT. ओके, एंड प्रकाश, यहाँ पे सारे कोर्स फ्री में ही होते हैं. जो यूट्यूब में आएंगे सब फ्री में होंगे, दोज हु आर सेइंग इट, बट फॉर मोर elaborate क्वेश्चन आंसर राइटिंग वगैरह दैट यू हैव टू अप्लाई इट. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. Now you see, citizens are eligible for all administrative posts while the aliens cannot. देखिए, ये हम आपको जो ये बता रहे हैं, that is what I am saying, the differences between difference between citizen and aliens. Okay, citizens and aliens. तो अब देखिए, ये फर्स्ट हम लोगों ने वी हैव टॉक्ड अबाउट फर्स्ट, दैट इज द डिनाइल, दे हैव नो राइट टू कंटेस्ट वोट एंड दे कैन नॉट होल्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस वाइल एलियंस कैनॉट. यानी सिटीजन्स ये सब कर सकता है, एलियंस नहीं कर सकता है. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द सिटीजनशिप, सिटीजन्स आर एलिजिबल फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट. यानी जितने भी भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है दे कैन ऑक्युपाई, यानी वो रिक्रूटमेंट देकर वो कर सकते हैं. बट यू सी the aliens does not, aliens ke paas this they don't have right. Is it clear? Now the aliens are of two type. Again, citizens of friendly countries are friendly aliens, while those of enemy countries are enemy aliens, the latter being denied some of the rights that are former may enjoy. यानी इनमें से भी हम एलियंस को भी, एनिमी एलियंस को भी सिटीजनशिप देते हैं. जैसे पाकिस्तान से लोग अगर यहां आएंगे तो हम लोग उनको सिटीजनशिप देंगे, बट उनको जो फ्रेंडली जो एलियंस है उनको जो राइट मिलेगा वो राइट एनिमी एलियंस के लिए डिफरेंस होगा. ओके, वो डिफरेंस होगा, एंड दैट विल डिस्कस लेटर ऑन. ठीक है, वो हम लोग डिस्कस लेटर ऑन करेंगे. देन यू सी, फॉर एग्जाम्पल, protection against arrest and detentions in certain case does not apply to enemy aliens. अब ये देखिए, फ्रेंडली एनिमी जो है, फ्रेंडली एलियंस जो है, उनको हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शंस देते हैं विथ अरेस्ट एंड डिटेंशंस. बट फॉर एनिमी एलियंस अंडर आर्टिकल 22 दे आर नॉट बीइंग गिवन. As when India is in war, the citizens of enemy country may be arrested without any notice having to be followed. Okay, मतलब इसका मतलब ये हो गया, अब देखिए, जब हम बात करते हैं
एनिमी एलियंस की, तो एनिमी एलियंस अगर हमारे देश में वॉर चल रही है तो उनको विदाउट एनी नोटिस द पीपल द गवर्नमेंट कैन अरेस्ट देम एंड पुट देम बिहाइंड द बार. Okay, so this is the difference between enemy aliens and friendly aliens. Again, aliens may have come to another country for a varieties of reasons. यानी जो फॉरेनर है, एलियंस फॉरेनर को कहते हैं, वो भारत में किसी भी कंट्री में जाते हैं, वो बहुत सारे कारण, देयर आर मेनी वैरायटीज ऑफ रीजन, there are many varieties of reasons. So alien may find asylum in a country to which they have fled from political reasons. अब देखिए, जैसे हम लोगों ने asylum दिया था दलाई लामा को, like we have given the asylum to Dalai Lama. Okay, we have provided the asylum to Dalai Lama. दलाई लामा को हमने क्या किया था? asylum दिया था. और दलाई लामा को when we provided asylum to दलाई लामा, आप देखिए उसको पॉलिटिकल रीजंस, दैट वाज पॉलिटिकल रीजन, और इसी के वजह से इंडिया चाइना वॉर भी हुआ था, इफ यू रिमेंबर. सो असाइलम इज अ लीगल प्रोटेक्शन. अब देखिए व्हाट इज, हाउ विल यू डिफाइन असाइलम? डेफिनेशंस ऑफ असाइलम. अब देखिए जब हम असाइलम की डेफिनेशंस की बात करते हैं तो यू सी asylum is a legal protections guaranteed to the people in any country who are afraid to return to their home country expels an alien in the deportations. अब देखिए जैसे आप देखिए तस्लीमा नसरीन, शी वॉज हैविंग अ बांग्लादेशी शी वॉज हैविंग अ बांग्लादेशी पासपोर्ट्स, और वो बांग्लादेश की थी. तो बांग्लादेश की होने के बाद भी यू सी व्हाट वी डिड, हम लोगों ने क्या किया कि वी डिड नॉट प्रोवाइड हिम दिस सिटीजनशिप. फ्रांस की कंट्री ने उन्हें दे दिया सिटीजनशिप. सो असाइलम, ये दिस असाइलम इज अ लीगल प्रोटेक्शंस टू द पीपल ऑफ एनी कंट्री वाज अफ्रेड टू रिटर्न. अब उनको ऐसा लग रहा है कि हम अपनी कंट्री में रिटर्न जाएंगे तो शायद हमारे लिए कुछ हो सकता है, इश्यूज खड़ा हो जाए, हमारी कंट्री में जाए तो हमको मार दिया जाए, तो इसलिए वो एक्सपेल कर दिए गए हैं और वो दूसरे कंट्री में शरण ले रहे हैं. दैट मीन्स दे आर टेकिंग देयर, यस, दे आर टेकिंग समहाउ, दे आर टेकिंग, वो लोग अपना कैसे ना कैसे शरण ले रहे हैं, मतलब they are there, they are living there, but they will not get all rights like tourists, students, employees and so on are the other types of aliens. देखिए aliens की भी definitions बहुत तरीके के हैं. There are many forms of aliens. If you see, there are many forms of alien, और उनमें से उसी forms of alien में से you see there are tourist aliens, there are students aliens, there are employees aliens and so on. There are others. So there is a third type as well as, अब ये second types of aliens, जैसे पहला citizen, दूसरा aliens. थर्ड टाइप ऑफ एलियंस में अगर हम बात करते हैं, थर्ड टाइप ऑफ एलियंस की अगर हम बात करते हैं, दैट इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who have allowed few certain citizenships right, as well as we'll discuss, and that will be discussed, we'll discuss later on. हम लोग इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे. ओके, कि इसके अंदर क्या दिया गया है. देन यू सी द फोर्थ क्लासेस आर द नॉन सिटीजन्स, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं NRI. This is what we say NRI. That is the fourth class of citizen is NRI, Indian citizenships, whose citizenships rights are limited. Till recently they did not have right to vote. यानी 2003 से पहले उनको right to vote नहीं था, but 2003 के बाद गवर्नमेंट ने amendment किया और amendment के थ्रू उनको right to vote का permission दे दिया. तो the process is going on. Okay. The residence, अब देखिए residence का क्या मतलब होता है. Residence is one who resides in a country for certain number of days, like 182 days, that is 6 months, more than 6 months, in the previous financial year as the Indian law defines. If not, he or she considered as NRIs, non-residents of India. Non-residents of Indian citizens is a citizen of India but has not resided in India for a required number of days. अब आप समझ में आए कि what do you mean by non-residents of India. देखिए there are many definitions of it. उनमें से एक definition है कि हमारे यहाँ non-residents of India, they are the citizens of India but they have not reside in India for this much date.
इसलिए हम उनको नॉन रेसिडेंस ऑफ, दैट इज व्हाई वी पीपल यूज्ड टू से इट्स अ नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया. ओके, that is why we used to do this. So it is clear to all. I hope that it is clear. Then you see again, a person of Indian origins, on the other hand, is one who acquires citizenship of another country, and he is no more the citizens of India, unlike an NRI. Unlike of NRIs का मतलब क्या होता है? Unlike NRIs का मतलब ये होता है, अनलाइक एनआरआईज का मतलब ये होता है, यूसी एनआरआईज का मतलब होता है कि एनआरआईज आर द सिटीजन ऑफ इंडिया बट दे हैव नॉट स्टेड फॉर अ स्टिपुलेटेड पीरियड. But you see, for Indian person of Indian origins, they are also, but they have left the country and they are living outside the country. So that is why it's NRI. Is it clear to everyone? Now, domicile means to stay in a country with the intention of making. Domicile means to stay in a country. Okay, so domicile means to stay in a country with intentions of making it his or her permanent home. Proof of such an intention is employment or property etc. अब देखिए डोमिसाइल का मतलब, जैसे आप सपोज कीजिए कि सपोज आई एम स्टेइंग इन बिहार एंड I have migrated to some other state of our country. So I have to get the domicile. वहां हम रहेंगे तो हमको वहां परमानेंटली हम कुछ समय के लिए रह रहे हैं और हम वहां प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि ये सारी चीजें हमको इसके लिए डोमिसाइल यूज किया जाता है. वर्ड डोमिसाइल इसके लिए कंट्री के लिए यूज करना. इज इट क्लियर पिंकी दुबे? The citizen of India provides for a single citizenship for the entire. अब देखिए अमेरिका में that is a dual citizenship. In America there is dual citizenships. Okay, so dual citizenship. अगर हम बात करते हैं अमेरिका में dual citizenship है. But India, the Constitution of India provides for a single citizenship. The Constitution of India provides for a single citizenship. Okay. Okay. So the constitutions of India has provided for a single citizenship. Yani we don't have dual citizenship, but dual citizenship NRIs के लिए है. Now, there is no provisions for the US models of being citizens of the country as well as the citizens of state like बिहार, कर्नाटका एंड फॉर एग्जाम्पल. अब देखिए हमने आपको क्या बताया अभी कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप पूरे कंट्री में है. तो हमारी कंट्री में अगर आप देखिएगा तो सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं तो बिहार, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, केरला, इनका अपना पर्सनल कोई सिटीजनशिप नहीं है. ये सिटीजनशिप दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इंडिया, सिंगल सिटीजनशिप. बट अमेरिका में यू सी द स्टेट लाइक कैलिफोर्निया, दे हैव देयर ओन सिटीजनशिप and they have their own citizenship, and California, there are 50 states, so they do have their own citizenship as well as the citizenship of America. Now see, but since 2003, a dual citizenship is allowed by Indian law with some restriction. यानी हम लोगों ने dual citizenships किसके लिए किया? PIO and OCI. ओके, पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. अब इसके लिए देखिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए हम लोग इसको ये 2003 के बाद से प्रोविजंस बनाया, यानी 2005 में अमेंडमेंट किया गया और उसको किया गया. नाउ पीआईओ कैन बिकम एलिजिबल फॉर सर्टेन सिटीजनशिप राइट्स
on par with NRIs in social, economic, commercial areas, even though PIOs are not citizens of India anymore. Okay, यानी आप ये जान के चले जब when I'll be explaining you PIO, when I'll be explaining you PIO, NRIs and overseas citizen of India. So you see there will be I'll be explaining you the differences. But the PIO is not the citizen of India. They have resided outside the country. They have sold out their property, whatever it is. But such PIOs who obtained overseas citizens cards are entitled to these benefits. यानी कुछ जिसको overseas citizens, but ये भी change कर दिया गया. That has also been changed in 2015 amendments. That we'll also discuss later on. Okay, is my voice is audible? Such dual citizenships are called overseas citizenship of India. Such dual citizens are called overseas citizen of India. So it is facilitated to satisfy the urge of the diaspora. Diaspora का मतलब होता है those Indians, those who are staying outside, to participate in the Indian national affairs more actively. To participate in the Indian national affairs more sincerely, more actively. Okay, so that is why we have provided PIO. And when I'll be discussing you PIO, person of Indian origin, and overseas citizen of India, there I'll be definitely explaining you. There I'll be explaining you that why the this promotion of PIO and NRI has been done by the government. Okay, now नाउ वी कम टू एक्चुअल सिटीजन. अभी जो हम लोग अभी बता रहे थे ये हम आपको आउटर एरिया सिटीजनशिप्स के आउटर एरिया को बता रहे थे. ओके, तो आप देखिए कि सिटीजन से ओके वेरी थैंक यू पिंकी दुबे. ओके, सो आप देखिए ये जो सिटीजनशिप्स के बारे में हम बात करते हैं, सिटीजनशिप्स के बारे में बात करते हैं. नाउ दिस इज द वर्ड सिटीजनशिप which is one can come across his or her day-to-day life. It is commonly used in a democracy for its resident. It is commonly used in a democracy for its resident. The word citizens or citizenship has a long history. अब देखिए इसकी हिस्ट्री में भी हम लोग थोड़ा चले जाए, वो हमारे लिए बेटर रहेगा. इसके अगर हम लोग हिस्ट्री में चले गए तो ऑब्वियसली विल कम टू नोटिस कि यस ये कहना क्या चाहता है. It is the results of long political struggle of mankind against non-democratic government. Of non-democratic government. Of non-democratic government. Okay, so you see when we अब आप देखिए कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स जो हैं, जो फ्रीडम स्ट्रगलर्स यानी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो फ्रीडम फाइटर्स ने क्या किया कि उनको सिटीजनशिप्स मतलब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब इट्स बेटर टू से colonializations लाइक कॉलोनी. And as you all know that India was also a part of colony. इंडिया भी एक पार्ट था कॉलोनी का. तो अब इस पार्ट के कॉलोनीज की वजह से क्या थी कि हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी हमको अपने सिटीजनशिप्स को लेने के लिए. ओके, हमें अपने सिटीजनशिप को लेने के लिए यस रियली वी हैव टू फॉट फॉर इट. हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा. देयर वर जस्ट रूलर्स एंड सब्जेक्ट. अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रगल किया नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से. इन दी पास द गवर्नमेंट्स which were non-democratic has no citizens. Yes, this is very true that in the past the government which were non-democratic had no citizens. Okay, in the past the government, इसका मतलब हो गया कि जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं थी उसमें सिटीजन्स का कोई वैल्यू नहीं था. और आप यू कैन सी दैट
इफ यू नोटिस एंड इफ यू कैन सी, तो आप देखिए कॉलोनियल टाइम में या फिर मोनार्कियल टाइम में, हेरिडेटरी राजा महाराजा के टाइम में, कि यस देयर वाज अ सिस्टम सिटीजन बट दे डोंट हैव से इन द एडमिनिस्ट्रेशन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रोल नहीं था. He does not have any say in the administration. So that is why it says that non, अब देखिए इस नॉन डेमोक्रेटिक, देयर वर जस्ट रूलर एंड सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट का मतलब हो गया पीपल, रूलर का मतलब हो गया किंग. Okay, so there were just ruler and subject. The people revolted against the dictatorial and absolute ruler in England, America, France, brought them down and to establish a new form of government called democracy. Yes, to form democracy. To form democracy. आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? पिंकी दुबे, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? यस, टेल मी. वेरी गुड. आप बताएं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. Okay, so now see, French, very good, very good. French Revolution started in 1769. अब 200 साल पीछे हैं. बैड लक. और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंग्लैंड में यू सी मैग्ना कार्टा वेरी पॉपुलरली नोन एज 1215. सो द पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द किंग, यानी उनके रिक्वायरमेंट, उनके फुलफिल, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं कर पाती थी किंग. और जब किंग नहीं कर पाती थी तो यू सी व्हाट दे डिड, दे रिवोल्टेड. पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट इट. हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों जाते हैं? बिकॉज गवर्नमेंट फेल टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट. गवर्नमेंट फेल टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट. बिकॉज ऑफ दैट वी ट्राई टू गो एंड रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. हम लोग इसी के वजह से क्या करते हैं? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर देते हैं. ओके, हम लोग गवर्नमेंट से रिवोल्ट कर देते हैं. सो यू सी, एंड एट दैट टाइम ऑल्सो आप देखिए कि क्या हुआ कि न्यू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स को जब हम बात किए तो पीपल रिवोल्टेड एंड दे फॉर्म अ डेमोक्रेसी. यानी अब लोगों की बात सुनी जाएंगी. ओके, अब हम लोगों की बात करेंगे. सो टुडे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड declares themselves as a democratic country, and in democratic country the government provides citizenships to the citizens. Further, it also provides certain rights which are imposed on their duties, certain duties. Yes, I can say, हाँ, हम इस बात को मान सकते हैं कि I can say this कि yes, the government जो है वो जो है the government, जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, when we people are talking about democracy, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, तो इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिटीजनशिप्स, नाउ दे आर बाउंड टू प्रोवाइड सिटीजनशिप्स. यानी उन लोगों को बाउंडेशंस था कि दे विल प्रोवाइड. फर्दर, इट आल्सो प्रोवाइड सर्टेन राइट्स एंड इम्पोज्ड ऑन देम. यस, अब देखिए हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज हैं विच आर इम्पोज्ड ऑन द सिटीजंस. सिटीजंस के लिए इम्पोज्ड कर दिया गया. ओके, सिटीजंस के लिए इम्पोज्ड कर दिया गया. Fact: the word citizens literally means a residents of a city who enjoy certain privilege of such residents. The word citizens literally means a residents of a citizens who enjoyed certain privilege of such residents. यानी citizens की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि कुछ ना कुछ वो उस कंट्री के लिए कुछ ना कुछ प्रिविलेज अडॉप्ट करता है. और जब वो कुछ प्रिविलेज अडॉप्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो वहां का नागरिक कहलाए, क्योंकि वो वहां रह रहा है. ही इज स्टेइंग देयर. इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स civics. Okay, it was derived from the Latin word civics. अब देखिए, the idea of citizenship was developed by the Greek.
ये भी बहुत सही है कि सबसे पहले ग्रीक में सिटीजनशिप आया, सबसे पहले ग्रीक में सिटीजनशिप आई, और ग्रीक्स में जब सिटीजनशिप आई तो उसके बाद यू सी वो बहुत एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं हम. Okay, we are discussing about the ancient time. Okay, so this is what today we'll be discussing with the citizenship. I'm very sorry today कि हमारा जो टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा हमारा टाइम चला गया. So I hope that कि you will cooperate with me and